Hi, I'm Jared. Welcome to Fun Science Demos. Today we have a little bit of a science puzzle for you, and it has to do with air. Here it is. I have a balloon inside this bottle, and that balloon is filled with water. How did I get the balloon into this bottle? I'll give you a hint. It has to do with air. So I know what you're thinking. Well, balloons filled with water are flexible. I can squish them. I can squeeze them. I probably just squeeze the balloon into the bottle. Let's see how that works. I have a balloon about the same size as the other one. Bottle, same size opening. I'm going to try and push it in. Getting somewhere here. That didn't work too well, did it? So we've cleaned up after our little water explosion. That clearly did not work. What happened is our balloon, I don't think you can see it, maybe a little bit, the balloon actually ripped as I was trying to push it into the bottle. That is not the answer we're looking for here. The answer to this puzzle involves air, and to get to this answer, we need to explore air. And our exploration begins with a balloon and a bottle. Let's take a closer look and see what we can find out. So we start with a balloon and a plastic bottle. Any plastic bottle will do as long as it doesn't have any holes in it besides the opening. And all I need to do is squish the balloon together and stuff it down into the bottle. And stretch the balloon's opening over the top of the opening to the bottle. I have it all set up. Now let's get ready to explore air. Well, where is the air? I have air all around me, pushing down on me, and I also have air inside this bottle. I can't see it because air is invisible. Now, air may be invisible, but through science we've discovered that air is matter, and air takes up space. So air inside this bottle is matter, and it takes up space. So what will happen if I try and blow this balloon up? It's not too difficult. I can blow up a balloon. I didn't really have any problems doing that. What will happen when I try and blow up this balloon and add more air to our bottle? What do you think? Let's find out. I'm not faking. I'm actually trying to blow air into this balloon and it's not working. Why? Because the air inside this bottle is taking up all that space. It doesn't let me blow that balloon up. So I know air inside this bottle takes up space, but now I want to use a different bottle and try it again. But there's one thing different about this bottle, and it's not the size or shape. There's something else that's different. We want to see if you can find out. So I'm going to take the balloon off of this bottle, same balloon, move the bottle off. Now I have a bigger container. I'm going to stuff the balloon into the bottle, and I'm going to stretch the balloon's opening over the opening of the bottle. There's one thing different about this bottle. Watch what happens when I try and blow this balloon up. Why was I able to blow this balloon up? Well, there's air inside the bottle. That air is taking up space. Why was I able to add more air to this bottle? What do you think? If you listen carefully, there's a clue. I'm going to do this 2 more times. Listen. It sounded like air was moving. Air actually was moving. Well, how is that air able to move? Well, if you look carefully down here, there's a hole in the bottle. I'll show you with this little stick. The stick actually can go through the hole. Well, what did that hole allow the air inside this bottle to do? It allowed the air, as I blew into the balloon, that balloon forced the air and pushed the air out of the bottle. Watch this. I have the empty plastic bottle. I line my hole up with a bottle. I'm going to blow in. The air rushed out of this bottle and moved that plastic bottle off the table. There was no air trapped inside the bottle. The air could escape out.
So now let's explore air a little bit more. We're going to do the same thing but change one little thing. Same bottle, same balloon, hole in the bottle. I'm going to blow the balloon up, but put my finger over the hole and watch what happens. Once I put my finger over the hole, the balloon actually stays blown up. Look at the top. You can see there's an opening in the balloon, but the air isn't coming out. Watch this. I can drop my stick down. It's open, but the air is not coming out. Well, why is that happening? So what's really happening here is that I have my finger over the hole. What happened with that hole? Well, that hole allowed air to move in and out. When I put my finger over the hole, air can't rush back into the bottle and push the air in the balloon out into this room. What happens when I take my finger off of the hole? Air should be able to move in and push the air out of the balloon. That's C, science in action. It worked, and I could even hear the air moving. Another way to do this is to use this hole to take the air out of this bottle and let the air in this room blow that balloon up. I'm going to inhale lots of little times. It's going to look like I'm kissing the bottle. I'm not. I'm going like this. I'm taking all the air out of the bottle. Watch what happens to the balloon. Here we go. I had to take all the air out of that bottle, and the balloon looked like it was magically blowing up. It wasn't magic at all. It was air doing all the work. So we are close to figuring out the answer to our puzzle, thinking back to the water balloon in the bottle. Well, all I need to do is the same thing we just did, but add some water from this pitcher. Here we go. Find the hole. Now, what do you think the next step is? I have an open balloon. I have a pitcher of water. All I have to do is pour water from the pitcher into the balloon and then tie it off. Let's do this. You can hear the water running into the balloon. Okay, now at this point you want to be very careful, because what would happen if I take my finger off of the balloon? Air would rush into this bottle and force not just air out of this balloon, but also the water that's inside. So I'm going to stick my finger in, grab it, I'm safe to release, tie off my balloon, and now I have a balloon in a bottle. Why? Because air. Through science, we've discovered that air is matter, and it takes up space. And we can do a lot of fun things with air. If you want to learn more about air, check out our links in the video description. Science is so cool. Sometimes it's a little bit wet. Thanks for watching. I vacuum bottle and put balloon on it, and after it go inside. As you can see in slow motion how balloon go inside the water bottle. I don't push it in. My name is Isha Joshi and I am studying in class 8. Today I will show you an experiment with balloon and a bottle. First of all, I will try to blow this balloon. Do you know why this balloon does not blow? Because the air trapped inside the bottle does not allow the balloon to blow. Now let's try it again. Do you know why this balloon blowed now? Because there's a hole inside my bottle which allows the air to move. If there is not an all hole in this bottle, then the air will get trapped and balloon will not blow. When I will blow this balloon and cover the hole with my finger, the balloon will get blown. And when I will release this, then the balloon will flatten.
Now let's see an experiment. Do you know why this balloon blew when I sucked the air from the hole? This happened because I have sucked all the air from this balloon bottle and the bottle is empty. So the balloon will get very sufficient space to get blown and it will suck the air from this room and get flattened. Now I will pour some water in this balloon. For that I have to blow this balloon again. Now I will pour the water from my jar to this ball. So you can see my balloon is filled with water. Now I have to not release the hole, otherwise when we were releasing the hole, the balloon was getting flattened. So if I will do this step, then the balloon will get flattened and all the water will splash out. So carefully I will insert my finger and I will take here. Now I will tie it. So you can see my balloon is inside the bottle. This shows that the air is matter and occupies space. Thank you. हेलो एवरीवन, आई एम द शाह। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। पानी का भरा हुआ बलून मैं इस बॉटल के अंदर डालूंगा। अगर हम सिंपली इसमें पानी डालेंगे और उसको गांठ लगाकर अंदर डालने की ट्राई करेंगे तो वो नहीं होगा। हम उसको साइंस की मदद से डालेंगे। तो पहले हम अगर इसको फुलाते हैं तो वो आसानी से फूल जाता है, लेकिन हमको तो पानी का भरा हुआ फुग्गा इसके अंदर डालना है। तो पहले हम इसको इसके अंदर डालेंगे और फिर इसके बलून के टॉप को बॉटल के टॉप के ऊपर लगा देंगे ऐसे। अब हम अगर इसको फुलाने का ट्राई करें तो ये फूलेगा नहीं, लेकिन हम इसके अंदर अगर होल कर दे एक छोटा सा, तो अगर हम इसको फुलाएं तो अब इस पर हमने होल पे सेलो टेप लगा दी है। देखो, ये इस पर सेलो टेप लगा दी और ये बलून फुला चुका है। अब इसके अंदर हम धीरे से पानी डालेंगे। तो इसका ओपनिंग थोड़ा कर देते हैं खुला। तो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको बाहर, इसकी जो टॉप है उसको बाहर निकालेंगे और उसके अंदर एक गांठ लगा देंगे, जिससे कि ये गुब्बारा पानी की बोतल के अंदर चला जाए। तो इसके अंदर गांठ लग चुकी है। अब इसको पानी के अंदर डाल दिया तो देखा, ये हो गया हमारा गुब्बारा पानी के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उन्नतल शाह और मैं पढ़ता हूँ छेली टक्कर हाई स्कूल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एक बलून को कैसे अंदर बॉटल के अंदर रख सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमको एक बॉटल चाहिएगी, उसके अंदर एक बलून
फिर एक टाटनी और एक सेलो टेप। तो देखिए, सबसे पहले हमको बलून को फूलाना है। ये नहीं फूल रहा है तो हमें इसको ये टाटनी से यहाँ पे होल पाड़ना पड़ेगा। देखिए, होल पाड़ दिया। अभी हम फूलाते हैं। तो देखिए, ये फूल गया है और हमें होल पड़ा है, वहाँ पे सेलो टेप लगा देनी है। तो ये देखिए, ये फूल गया है। तो इसके अंदर इसमें से हमें सीखना मिलता है कि एयर होती है तो ही अंदर बलून फूल सकता है, वरना नहीं फूल सकता। एयर प्रेशर की वजह से ही वो फूल गया, इसलिए हमने वो होल पाड़ा था। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है ज्वाल। मैं एक प्रेशर एक्सप्लोरिंग एयर एंड एयर प्रेशर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। उसमें हमको एक चाहिए बॉटल और एक बलून, और मैं देखो ब्लो करूँगा बलून। तो ब्लो हो रहा है। अब हवा ऊपर से बाहर नहीं निकल रही है। मैं और ऐसे देखो निकल गई है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने यहाँ पर होल कर दिया है। देखो, मैंने यहाँ पर होल कर दिया है, छोटा सा यहाँ पर होल कर दिया है। और मैं यहाँ से ब्लो करूँगा तो अंदर बलून बड़ा होगा, तो एयर जो है उसको निकलने की जगह चाहिए। तो हमने होल करके जगह बना दी है। यहाँ ब्लो करूँगा तो एयर निकले जाएंगे। फिर मैं ऐसे यहाँ पर उंगली रख लूँगा कि एयर अंदर के अंदर आएंगे और ऊपर से हवा नहीं। देखो मैं यहाँ पर उंगली रख देता हूँ ये होल पर और ब्लो करता हूँ। ब्लो ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर निकलने की जगह ही नहीं है, तो ब्लो ही नहीं होगा। अब देखो, उंगली हटा दी मैंने, देखो, और देखो हो गया ब्लो, देखा। और मैं यहाँ पर जैसे ऐसे छोड़ूंगा तो हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि एयर अंदर से यहाँ से बाहर निकल गई और यहाँ से बाहर निकल गई। Hi sir, good morning. जय स्वामीनारायण. My name is Patel Krishna from Standard 8. तो आज मैं डेमो स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं आपको रीज़न कहूँगी। सो ये हमारे पानी भरा बलून है और ये हमारी खाली बॉटल। तो ये बलून तो अंदर जाना है क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो हम पानी बाद में भरेंगे और फिर इसके अंदर बलून डालेंगे। तो हम इसकी प्रोसेस इसके अंदर करते हैं। तो मैंने पहले से इधर एक होल करके रखा है, जिससे हमें ये होल है जो अंदर की एयर बाहर निकलता है। तो इसके ऊपर मैंने अब फिंगर रख दी तो ये बलून ब्लो ही नहीं होगा। और इसके ऊपर से मैंने फिंगर हटा ली तो ये बलून हो गया ब्लो। तो अब ऐसे ही हम बलून ब्लो करते हैं, इसके अंदर वाटर फिलअप करके फिर बलून को पानी की बोतल के अंदर छोड़ देंगे। ये बलून तो मैंने ब्लो कर दिया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। बलून निकालेंगे हम, तब थोड़ा पानी तो निकलेगा ही बाहर। ये बलून छोटा हो गया है और अब हम उससे बांध देंगे। और ये पानी की बोतल के अंदर हमने छोड़ दिया। तो इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न है एयर, जिससे हमें इधर मैंने होल के ऊपर स्टिक कर दिया है। क्योंकि हम होल के ऊपर स्टिक नहीं करते तो इसकी एयर पूरी बाहर आ जाती और ये बलून ब्लो ही नहीं होता। और मैंने इधर फिंगर रखी हुई थी, जिससे बलून मैंने ब्लो किया था वो बलून वापस से अपनी नॉर्मल साइज में ना आ जाए। तो उसके लिए
उसकी बॉटल के अंदर हमने बलून ब्लो किया तब ये ब्लो कैसे हुआ, और जब मैंने फिंगर हटा ली तब ब्लो हुआ, और जब मैंने फिंगर रखी थी तब ब्लो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो एयर है वो अपनी बॉटल के अंदर स्पेस ले लेती है और जिससे बलून हमारा ब्लो नहीं होता है। और इधर से हमने होल किया है, उसकी वजह से एयर बाहर निकलती है और बलून हमारा ब्लो होता है। इसीलिए इसका रीज़न एयर है। थैंक यू, बाय। Jai Swaminarayan. I am Tanmay Patel of Standard 8th and today I am going to show an experiment on the topic air and its pressure. So let's begin. I have took one plastic bottle and a balloon. So I want this balloon to be blown up in this bottle. So first I will squeeze this balloon inside the bottle and stretch its mouth. And now if I try to blow it up, as you can see, it can't blow up because of the air present in it. As we all know, air is everywhere, but it's invisible. There was no way to be escape for the air. So now we will make a hole inside the bottle. As you can see, I have made a hole inside the bottle. Now if I squeeze this balloon inside this bottle and now if I try to blow it up, as you can see, I am able to blow the balloon up. So that was it for today. Hello sir, good morning. My name is Swam Patel, studying from Standard 9. For this experiment, we will need an empty bottle, a balloon and some water, and also we will need a pair of scissors. First of all, you have to put the balloon on the neck of bottle like this. And then you have to make a hole in bottle using the pair of scissors. And then pour the water inside of this balloon and put your finger on the neck of the balloon. And make a knot like this and leave it. How this experiment works, let me explain you. First, that we know that air occupies space. Same, in bottle there is air. If you blow the balloon, there is no space inside the bottle, and that is not possible that you can blow a balloon. After making the hole inside the bottle, the air can pass through the hole. This is how this experiment works. Thank you, sir. The material for that we need are a balloon, a plastic bottle. So first of all, I am trying this with the balloon here and doing this. And now I will try to blow it up. Can you see it? So now I will try to blow up. So can you see it is not blowing? And now I have done a hole here. Can you see? Yeah. So here is the hole. Now we will try to blow it up. Let's. Now she has done here. She will put her finger on it, and now we will try to fill the water in the balloon. And now I'm going to knot in the balloon for proper shape. Now the balloon is inside the water and it is also filled with water. When there was air in the bottle, the balloon can't blow. But
When we make a hole in a bottle, the balloon started blowing. It is just because of air moving around. It is because of the air is moving around. So, it was the air who was doing all the work. And my conclusion is air takes place. हमें इस एक्टिविटी के लिए चाहिए वन बॉटल बलून और ये ग्लास ऑफ वाटर। मैंने इस बॉटल में होल कर दिया है क्योंकि हम जब ये बलून वाटर बॉटल में डालेंगे तो ही ये बलून फूलेगा, इसलिए तो मैं ये बलून वाटर बॉटल में डाल रही हूँ। अब देखो मैं ये फुलाऊंगी, हमें ये होल ओपन रखना है क्योंकि तो ही ये बलून फूलेगा, और जब ये बलून फूल जाए तो हमें इस होल को दबा देना है उंगली से। देखो ये बलून फूल गया और मैंने ये होल भी दबा दिया है। अब मैं इसके अंदर वाटर भरूँ तो मैंने तो इस बलून मैंने फुला लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और मैंने इस होल में सारा टेप लगा दिया क्योंकि ये बलून छोटा ना हो जाए। फिर इस बलून के अंदर से पानी ना बाहर निकले इसलिए मैं मेरा थंब इस बलून में रख रही हूँ, और फिर धीरे से हमें ये इस बलून को इस बॉटल की कैप से निकालना है। फिर हमें इससे नॉट करनी है। ये बलून है, ये बलून उसके अंदर चला गया, और ये देखो इसमें पानी भी है इस बलून में। Good morning, sir. My name is Ketan Shah. I am studying in class 9th CMS. So today I am going to show you how to put a water balloon in a bottle. पानी दे। It does not get air in the bottle to come out, so the balloon is not got full. Now I will show you one thing. I make a hole in a bottle. I make the hole two sides. Now I put a balloon into the bottle. Now I will put air into the balloon. It has air in the air goes out from these holes, so the balloon is blowing. Now I put two fingers on these holes. See, the air is not allowing the balloon to flow out.
Now I will blow the balloon from these holes. See, the air goes out from this, and I pulled the air, so that's why the balloon is blowing out. Thank you. Hello sir, my name is Udam. I am from EMS. Just one minute. First of all, I am doing the experiment of balloon and water. Balloon and water. Take the bottle and balloon. Jam the balloon with upper pressure of the bottle. Swallow the balloon with mouth. Give air using mouth and water. And by this trick, I have done this. Water balloon in this bottle. Good morning, sir. We do amazing facts of science experiment. First of all, we take bottle, then balloon. When we put in the bottle balloon, the balloon was not takes air. Then we hold the bottle, two-side hold. See, this side and this side. Then when balloon was take air, see this. Then we do inside water. See, then we take air and go through. Then we take out of it. See, so this is ready. My name is Patel Gandhi. I am studying in Standard 10 and today I am going to do one experiment. For that experiment, we need balloon, pin, water, cellotape and a plain bottle. I am inserting this balloon in the bottle and cover the bottle mouth with the balloon. I am poking the hole in the bottom side of the bottle. I am using the cellotape to cover the hole. Now I am filling the air in the balloon. You can see I am covering the hole by the cellotape and the air is not outside. Now I am fill the water in the balloon. Now I am plugging this balloon outside. And tie up this balloon. You can see the balloon is in water, filled up of water.
Thank you. For this bottle balloon experiment, we need a plastic bottle, a glass of water, a balloon, a thumb pin, and a duct tape. Step 1. Put the balloon in the bottle, wrapping the open end around the mouth of the bottle. Take a deep breath and try to blow up the balloon. No matter how hard you blow, it doesn't blow up. Now poke a hole in the bottom of the bottle using a push pin. Take another deep breath and try blowing up the balloon. It's success. While the balloon is still inflated, cover the hole in the bottom of the bottle with a finger and take your mouth off the balloon. It stays inflated. Then take your finger off the hole in the bottle and the balloon will deflate. Now it's time to make the water balloon. Blow up the balloon as directed in steps 4 and 5, then cover the hole in the bottle with piece of duct tape so that balloon stays inflated. Make sure that the tape will able to hold for a while. Although the bottle appears empty, the first thing to remember is that it is actually filled with air. Before you poke a hole in the bottle, the only way for the air to escape is through the mouth of the bottle. Once the mouth is covered with the balloon, the air is trapped inside. When you try to blow up the balloon, it won't inflate much the first time because the bottle is already filled with air. There is no room for the balloon to expand inside the bottle. However, when you punch a hole in the bottle, the air molecules in the bottle have an exit. They are pushed out as the balloon fills the space inside. As long as you plug the hole, the balloon stays inflated because there is no air rushing back into the balloon to push on the balloon. When you take your thumb off the hole, outside air flows back into the bottle as the balloon collapses, releasing the air that was inside of it. Because of the elasticity of rubber or latex, the balloon shrinks to its original size as the air rushes out of the top of the bottle. हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पानी से भरा हुआ बलून हम पानी की बोतल में कैसे डाल सकते हैं। तो ये मैंने करके दिखाया है आपको, आप पहले वो देख लीजिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने बलून है, ये इसमें पानी भर रहा है। अब मुझे पहले से ही मैंने टाई करके रखा है क्योंकि इसमें एयर ना जा सके। अब मैं आपको इसके अंदर पानी डाल के दिखाऊंगा, देखना आप लोग। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे से बलून जो है उसकी साइज़ अब बढ़ रही है, देखो। अब उसकी साइज़ तब तक बढ़ेगी जब तक उसकी कैपेसिटी है बॉटल की। बलून की तो बहुत बड़ी है लेकिन बॉटल की कैपेसिटी कम है, देखो। अब इसकी कैपेसिटी हो गई है फुल। अब मैं क्या करूँगा, इसको धीरे से ऐसे करूँगा और फिर ऐसे करके इसको कर दूँगा टाई, ताकि उसकी जो पानी है वो भी बाहर ना निकल सके। तो आपने देख लिया होगा कि मैंने कैसे पानी के अंदर, मतलब पानी के बॉटल के अंदर बलून को डाला पानी फिलअप करके। अब आपका क्वेश्चन वो होगा कि अब वो कैसे हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, ये सब खेल है एयर का, बिल्कुल हवा का। अब एयर की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, आपको दिख रही होगी। एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एयर हमको दिख नहीं सकती। वो एयर, जैसे कि एयर ऑक्यूपाइज मास, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, मास भी वो ऑक्यूपाई करती है और स्पेस भी, यानी कि जगह भी और वज़न भी ऑक्यूपाई करती है। तो उसी की वजह से बॉटल में मैंने जो होल किया था, उस वजह से जो अंदर की एयर थी वो जब मैंने बलून फिल किया तो वहाँ की वहाँ रह गई और उधर से बाहर आ गई। और जब वो एयर बाहर जा रही थी तो उधर से कोई भी अंदर एयर जाने का रास्ता नहीं बचा था, तभी मैंने उसके अंदर पानी फिलअप किया। ऐसे ही वो बलून फिलअप हुआ पानी से। तो यही आंसर था इसका, एयर। थैंक यू। Today's the topic is air and air pressure. For this experiment, we need a bottle, a balloon, a tool, and a glass of water. First of all, take a bottle and a balloon. I will insert in the balloon like this and stretch the opening balloon to cover the top of the bottle like this. Now I will try to blow the balloon. When I
try to blow the balloon doesn't expand. This means that the air had already occupied space in the water. Now I will make a small hole in the bottle by this tool. Like this. Now I will again try to blow the balloon. This time when I try to blow the balloon expands. This is because the air inside the balloon moves out through the bottom of the hole. The motor draws through this hole so balloon is expand. Now I will again try the balloon and I have blown the balloon and covered the hole of the bottle with my finger. We can see that balloon remains as it is. This is because the air neither moves and no word moves through the balloon. Now I will remove my finger. We can see that the balloon swings. This is because but here again moves through the hole inside the bottle. Now I will show the effect of the air pressure. First of all, I will again blow in the balloon and I will cover the hole with my finger. Now I will remove my finger. Now I will add some water in the balloon. Now I will remove my finger. When I remove my finger, we can see that the water sprays out from the balloon. Sprays out from the balloon. This is because the air rushes inside the balloon. This sprays off from the experiment. We can conclude that air is a matter, and every matter occupies expands space every day. Thank you. सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विदम प्रहृति और आज हम देखने वाले एयर प्रेशर क्या होता है। राइट, तो हमको कुछ नहीं करना, एक बॉटल लेनी है और उसमें मतलब सर ने जो कल वीडियो बताया था उस बॉटल में क्या था, एक बलून और पानी था। राइट, तो अंदर वो ऊपर से तो नहीं जा पाएगा, तो हम उसमें होता है कि आज हम वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक बॉटल ले लेने की है। राइट, और उसमें हमको बलून अंदर टाइप कर देना। राइट, और हमको फिर आप फूंक मारो तो मतलब वो नहीं फूल सकता क्योंकि उसमें अंदर से ऑलरेडी पहले से एयर है। राइट, इसलिए वो नहीं फूल सकता। तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी बोतल ले लेंगे, उसमें होल कर देंगे एक छोटा सा होल, और फिर से हम मतलब वो बलून पर टाई कर दें उसके अंदर। उससे थोड़ी बड़ी साइज की होनी चाहिए। राइट, और उसमें हम बलून टाई कर देंगे। फिर हम उसमें मतलब फूंक मारेंगे तब वो बलून फूलेगा। राइट, तो उसमें एयर की मतलब जो आना जाना अंदर होता था। राइट, इसलिए वो बलून फूला। अगर देखो वो होल नहीं होता तो फर्स्ट वाली बॉटल में नहीं फूला। राइट, तो हम वैसे ही अपने वैसे टाई कर दिया। राइट, मतलब हमने फूला दिया, फिर वो जो होल था उसमें आपको होल पे आपको अपनी उंगली रख देनी है और फिर फूला कर उसमें पानी रेड देने का, टाई कर देने का, तब वो पानी अंदर रहेगा क्योंकि अंदर पानी है और एयर है। ओके गाइस, थैंक यू। Again to tell you something about science with the help of the experiment. So now without any further ado, let's quickly get into this video. So I have a balloon inside this bottle. It is filled with water. How did I get the balloon inside this bottle? It has to do with air. Strange, right? But let's understand this with the help of the experiment. First of all, take a bottle and a balloon. Insert the balloon inside the bottle. I will stretch the opening of the balloon.
Cover the balloon like this and you have to make a small hole with the help of a pointed tool as shown here. Now, when you try to blow the balloon, it expands. The air inside this water will move through this hole, so the balloon expands. Again, I will try to blow the balloon, but with the twist, I will cover the hole with my thumb. You just see. Like this. Then pour some water in the balloon like this and safely tie it off the balloon. You can take someone's help also if needed. Now I have balloon inside the bottle. This happened because of air only. I hope you like this video. I will be back soon. Till then, bye bye. Take care and stay happy. Hi everyone, my name is Anand Mekwan and today we are going to see an experiment of how the water balloon goes into the bottle. The water balloon in bottle experiment will show you just how powerful the air pressure actually is. For this experiment we have to take 4 things. First, 1 liter bottle. Second, tape. Third, push pin. Fourth, water. So let's go for it. Step 1. Put the balloon into the bottle, wrapping the open end around the mouth of the bottle. Step 2. Take a deep breath and try to blow up the balloon. Now, no matter how hard you blow, it just doesn't blow up. Step 3. Now, poke a hole in the bottom of the bottle using a tack or push pin. Step 4. Take another deep breath and try blowing up the balloon. Step 5. While the balloon is still inflated, cover the hole in the bottom of the bottle with the finger and take your mouth off of the balloon. It stays inflated. Step 6. Take your finger off of the hole in the bottle and the balloon will deflect it. Step 7. Now it's time to make the water balloon blow up the balloon as directed in steps 4 and 5. Then cover the hole in the bottle with a piece of duct tape so that the balloon stay inflated. Make sure that the tape will be able to hold for a while. Step 8. Fill the inflated balloon with water and of the balloon, you have achieved the water balloon in a bottle. So you have seen the experiment of 8 steps. So this is the science behind the water balloon in the bottle. Thank you. Thank you for seeing it. Hello sir, I am going to talk about the water balloon experiment. Here is an example of a water balloon experiment. Here the water balloon goes inside a bottle. How it can be possible? Here there is a science of air and air pressure. Here a person has made a same experiment of air and air pressure. He has taped the balloon on bottle cap and put the balloon inside. Now we will see how this person will fill the balloon from inside.
You can clearly see here there is a hole made by this person. Now he will start blowing up the balloon from that hole. So when this man started taking up air from the bottle, the balloon also started taking up air from the atmosphere and filled itself. This man has hold up the hole so that the air cannot go in bottle and the balloon will remain the same. Now he started pouring the water in the balloon. Now since the balloon has been filled with the water, he will tie up the balloon. Now the balloon is in the bottle and our experiment has been proved. Conclusion: since the water balloon has been gone inside a bottle due to the air pressure inside the bottle and the atmosphere. By making a hole inside the bottle and taking out the air, the balloon gets filled up and we can pour water and tie up the balloon. Thanks for watching. You can see this bottle, and inside the bottle there is a balloon. How the balloon get inside the bottle? For that, take one balloon and set inside this funnel. Fit this balloon in this funnel like this. You can see. Put this balloon in this bottle like this and set on the tap. Now put this funnel like this on the tap and balloon in the bottle. Now start the tap. The balloon will blow and the water will. Now tie this balloon. And put into the bottle. So you can see that balloon is in the bottle. Thank you. Hello, my name is Nealpet Pancha. I am studying standard 10 from JP Thakkar High School. Today I explain one experiment. Reason of experiment 1 is water has a non-definite shape. It has occupied space. आप इधर देख सकते हो कि मेरे पास पानी भरा हुआ बलून है और एम्प्टी बलून है, और आप इधर देख सकते हो कि इधर कम जगह है, अंदर से ज़्यादा जगह है। तो अब मैं ये पानी भरा हुआ बलून है ना, मैं डालूंगा ना तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका स्पेस ज़्यादा लेता है तो नहीं जाएगा, और ये ना स्पेस कम लेता है तो आसानी से जा सकता है। तो मैंने क्या किया था, ये है ना एम्प्टी बॉल, मैंने बॉटल के अंदर डाल दिया और ये है ना इधर से पकड़ लिया और पानी भर दिया। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने कैसे भरा था। तो रीजन है कि water has non-definite shape and it has occupied space. आप
पानी को ग्लास में रखो तो ग्लास की शेप में रहता है, और बाउल में रखो तो बाउल की शेप में रहता है. Air, water and gas has occupied space. Thank you. हाय गाइस, माय नेम इज़ मकवाना और आज हम बताने वाले हैं एक्सप्लोरिंग ऑफ एयर एंड एयर प्रेशर. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें की बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़, आपको एक बॉटल चाहिए जिसमें कोई भी होल नहीं. दूसरी चीज़, एक बलून, और ये बलून फुल ऑफ वाटर होना चाहिए. जिसका मतलब है आप जो होली में खेलते हैं बलून, वो बलून फुल ऑफ वाटर होना चाहिए. और आप लोगों को ट्राई करना है कि वो बलून बॉटल के अंदर कैसे जाता है. एक बॉटल, और इस बार बलून के अंदर वाटर हम लोगों को नहीं चाहिए, सिर्फ बलून चाहिए. और हम लोगों को बलून को बॉटल के अंदर डालना है, और जो बलून की टॉप होती है वो बॉटल की टॉप के ऊपर हम लोगों को जैसे सील कर देना है. बाद में हम लोगों को ट्राई करना है कि हवा डाले. इसे चाहिए, लेकिन इस बार इस बॉटल के अंदर एक होल चाहिए. हम लोगों को वही चीज़ें चाहिए. बॉटल के अंदर हम लोग को बाद में बलून डालना है और सील अप कर देना है. अब इस बार हम लोगों को ट्राई करना है कि उसके अंदर हवा पूरा, क्या हवा जाएगी अंदर. आप लोग बोलिए, हवा डाल रहा है तो बलून फूल रहा है. बलून क्यों फूल रहा है? उसके अंदर होल है, और बॉटल के अंदर जो एयर है वो होल से बाहर निकल जा रही. और जब वो बलून छोड़ रहा है, वो होल के अंदर जो कुछ भी वो बाहर निकला है वो अपने आप वापस अंदर चले जा रहा है. इसलिए बलून के अंदर से जो हवा है वो भी बाहर निकल जा रही है. हम लोग आते हैं अपनी मेन एक्सपेरिमेंट पे. इस मेन एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी. पहली चीज़, एक बॉटल जिसके अंदर होल होना चाहिए, एक कप ऑफ वाटर, और एक बलून. हम लोगों को वही चीज़ें वापस करनी है. हम लोगों को बलून अंदर डालना है, बलून को ऊपर से सील कर देना है, और बाद में हम लोगों को बलून को फुलाना है. और जब फुलाएंगे तो हम लोगों को उसके आगे हम लोग को अपनी फिंगर रख देनी है जहाँ होल है. बाद में जो होल के ऊपर फिंगर रख देंगे, ये जो बाहर आगे नहीं जा सकता. सो बलून के अंदर जो बलून फूला हुआ है वो फूला फूला ही रहेगा. तो हम लोगों को कप ऑफ वाटर है उसको लेके हम लोगों को बलून के अंदर डाल देना है. और हम लोगों को ये चीज़ बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि हम लोग जो वो होल के ऊपर उंगली रखी हुई है वो छोड़ देंगे तो वाटर के साथ वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों बाहर निकलेंगे. सो हम लोगों को पहले वो सील है उसको निकाल लेना है, बाद में उंगली को छोड़ देना है, बाद में वो सील को नॉट डाल देनी है, और बाद में हम लोगों को बलून को छोड़ देना. बाद में आप देखेंगे कि बलून अंदर है और बलून के अंदर वाटर. First of all, good morning to all. My name is Harsh K. Rathod from Srishti English Medium School, Standard 10. Our challenge 3 is how to put water-filled balloon in bottle. First, we have to put balloon in bottle. Now there is impossible to fill water or air in balloon. So we have to put small hole. Now we have to fill air in balloon and put our finger at the hole of bottle. Now we have to fill the water and take out the finger from hole. Now we have to close the hole of balloon and the water filled with balloon is in bottle. Hello guys,
आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग एयर एंड एयर प्रेशर का एक्सपेरिमेंट। गाइस, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि एक बॉटल है, उसके अंदर एक बलून है जो फुल ऑफ वाटर है, और उसके अंदर वो बलून कैसे गया, उसके पीछे का साइंस क्या है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए गाइस, हम आज का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक बलून, एक नीडल जैसा आप बोल सकते हैं, एक वाटर बॉटल और थोड़ा सा पानी। तो गाइस, हमें इस बलून को इस बॉटल को हमें अंदर डालना है। चलो हम इसको अंदर डालते हैं। देखिए गाइस, हमें एक होल भी करना है। हमारी जो नीडल थी उसकी मदद से। चलिए हम अब होल करते हैं। देखिए गाइस, मैंने होल पहले से ही कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने इस बलून को इस बॉटल में अंदर डाल दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है। सॉरी गाइस, मेरा जो पहला वो बलून था वो फट गया था, मुझे भी वो नहीं पता। इसलिए गाइस अब मैं इसको फूलूँगा और फिर बाद में हम उसके अंदर पानी डालते हैं। तो गाइस, अब हमारा जो बलून है वो फूल गया है। अब हम उसके अंदर पानी डालते हैं। चलिए, चले गाइस, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर गांठ मारते हैं या फिर टाइट करते हैं। बहुत ही गाइस सेफ्टी से आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी से हम बाहर आ सकता है जब मैं मेरी उंगली उस होल से उठाऊंगा तो। इसलिए गाइस, आपकी उंगली जो है वो हटाना मत जब तक ये हमारे रुकिए। यस गाइस, आ गया। देखिए गाइस, हमारा जो बलून है देखा था हमने वो कैसे पानी सब बाहर आएगा। लेकिन अब देखिए बलून है, अब उसके हम गांठ बांध सकते हैं। मुझे गांठ बांध, अरे भाई साहब। क्या गाइस, आप लोग तैयार है हमारा फाइनल रिजल्ट देखने के लिए? चलिए देखते हैं। ये देखो गाइस, ये रहा हमारा बॉटल, और अरे यह है उसके अंदर देखो गाइस, ये बलून है वो, और वो फुल ऑफ वाटर है। लेकिन ये जो मेरी गांठ है वो उसके अंदर आनी चाहिए, लेकिन पता नहीं वो नहीं आई। रुकिए, थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखिए गाइस, ये रहा हमारा बॉटल। एक्सपेरिमेंट हमारा तैयार है, एक्सप्लोरिंग एयर एंड एयर प्रेशर। अगर गाइस आपने जब बलून फूला है और जब आप पानी डाल रहे हैं, और अगर आपने हमारा जो ये होल है उसके ऊपर से आपने अपनी उंगली हटा दी, तो हम उस एयर जो है उसके पानी के अंदर वो सब उसके ऊपर आएगी, और
सब पानी आपके मुंह पर आ जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप अपनी उंगली जो है वो उस होल पर से हटाना मत। और ये है आज हमारा रिजल्ट, ये आप लोग देख सकते हैं। गाइस, आपने हमारा ये जो है वो देख ही लिया है हमारा रिजल्ट। चलिए अब हम यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त करता है। जय श्री स्वामीनारायण।